Okay, so if you do not have any questions, let's begin with today's topic. So कल हमने BMR के बारे में थोड़ा सा किया था. Today we are going to talk about how we calculate them. BMI, BMR, RDA and nutritional assessment. So things जो हम एक डाइट प्लानिंग के टाइम इनिशियली बिगिन करते हैं by doing the calculation. After drinking water in the morning before brushing is good. Okay, let's start with BMI. BMI is known as body mass index and BMI basically हम weight and height को लेके calculate करते हैं. BMI हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज या बॉडी फैटनेस परसेंटेज नहीं, बॉडी फैटनेस कितनी है. एंड but we cannot rely only on BMI to understand that the person is overweight or obese. Just a second. तो BMI बेसिकली हमें यस बताता है कि इंडिविजुअल अंडरवेट है, ओवरवेट है या नॉर्मल कैटेगरी में है, बट BMI is also not so much we don't have to so much depend on BMI क्योंकि कभी-कभी BMI एक रेंज में होते हुए भी the interpretation can be different. I'll just explain you what I am trying to say. First of all, let's understand about the BMI ranges. So anybody who has a BMI of less than 18 will fall in the category of underweight. Anybody who has the BMI of 18 to 24.9, he falls in the category of normal weight. Anybody who is above 25 and falls between 25 to 29.9, he falls in the category of overweight, and anybody who's above 30 BMI falls in the category of obese. So now BMI calculate kaise karna hai? We divide weight and with the height, and height has to be in meters, and we take the square of the height. Okay, height multiplied by height. So here if we take weight as 88 kgs, so height is, for example, 165 centimeters. So the first task is to convert height into meters. So 165 divided by 100, 1.65 meters. So 1.65 का फिर हम square लेंगे, and then we divide the square with the weight, which is 88. So in this example, if you see below, the BMI is coming to be 32.35. So that means the individual is in obese category. Here is another example for BMI calculation. The individual is 65 kgs of weight and the height is 165 centimeters. So we convert it into meters, which is 1.65 meters. We divide weight by 1.65 square, which is 2.72, and we get the BMI of 23.8, which is again falling in the normal category. Okay, but as I was telling that BMI, like if two people are there, they have same statistics, they have same weight, they have same height, they have same BMI. Okay, because weight and height same hai, unka BMI bhi same hai, but one person is looking little fatter and one person is looking little leaner. So why is that so? Because maybe one person का जो weight है उसमें body composition of muscle mass जो है वो ज्यादा है, and another person में body composition of fat mass is more. So the person who has more fat mass is looking a little obese, and the person who has more lean mass is looking leaner. But बैलेंस अटेन हो गया, इसलिए वेट उनका दोनों का सेम है. सो दैट इज द exclusion thing that we need to do for BMI. Also, we get same BMI
but women will have, अगर men and women का same BMI है, but in case women will have more fat than men because men में muscle mass ज्यादा होता है. Same BMI में blacks will have less body fat than whites. Asians will have more body fat than whites. Older people will have more body fat than younger adults, and athletes will have more muscle mass than the non-athletes. There are certain terms that we use. Obesity. Obesity or overweight is when the BMI is between 25 to 29.9. Android obesity is when somebody has upper body fat accumulation, that is more fat around the waist and upper abdomen. And gynoid obesity is when there is more fat deposition in thighs and buttocks. Yo-yo effect is used when a person constantly lose weight and then again gain weight and then again lose weight and gain weight. This has complications in the overall health. So this is known as yo-yo effect. First thing is we calculated BMI. Second thing we calculate is ideal body weight of a person. So when we subtract 100 from the height of a male, we get the ideal body weight of a male. And when we subtract 105 from the height of female, we get ideal body weight for female. Now, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने 165 सेंटीमीटर्स इज द हाइट, उसमें से 100 माइनस किया, सो वी गेट 65 kgs. 65 kgs एक इंडिविजुअल का आइडियल बॉडी वेट है, बट दैट डज नॉट मीन कि 65 ही हमें टारगेट करना है. प्लस एंड माइनस 3 to 4 kg इज ओके. सो 65 अगर आइडियल बॉडी वेट आया है, 62 to 68 kg के बीच में अगर कहीं पे भी वो वेवर अराउंड कर रहे हैं, that means the person is in ideal body weight. Likewise 60 kg अगर फीमेल का आइडियल बॉडी वेट है, so anywhere between 57 to 63 kgs, if she falls in her ideal body weight. There are other anthropometric things that we can calculate. One is waist hip ratio, जहां हम waist की measurement सेंटीमीटर्स में लेते हैं, hip की measurement सेंटीमीटर्स में लेते हैं, and we divide waist measurement with the hip measurement. Normal is 0.7. Men की should be less than 0.95. Anything above 0.95 is critical. Women की waist hip ratio should be less than 0.85. Body fat, males have around 25% fats and females should not be more than 30% fat. Any questions related to BMI? Gray, please check your settings. I will just be asking questions just related to BMI. Okay, please don't ask questions which are not related to BMI. Yes, Hema, please ask your question. मैम, जैसे आपने बताया एंड्रॉइड ओबेसिटी एंड सेकंड वन इज gynoid obesity. यस. तो मैम अगर किसी को फैट डिपोजिशन एब्डोमिनल एरिया में है एंड आल्सो बटक में भी है, थाइज में भी है, तब उसको क्या बोलेंगे? The person is obese, like you know, अगर एक person differentiate करना है तो obviously हम apple shape, pear shape बोल सकते हैं, but अगर एक person overall obese है, then we don't have to name it. Okay, ma'am. Thank you. Okay, yeah. Yes, Gra, please ask your question. Ma'am, please pardon the waist to hip ratio. Sorry, please come again, Gra. Waist to WHR ratio, ma'am. Waist hip ratio. Yeah, The yeah. normal is 0.7. What is it, ma'am? How to calculate? You take the measurement of waist, you take the measurement of hips in centimeters and divide waist with hip measurement, you get waist hip ratio. Right. Okay. Just a second, I was trying to get something. Just a minute. All right, Gautami, please ask your question. मैम BMI को डिवाइड कैसे करेंगे? वेट लेंगे
वेट को ऊपर लिखेंगे या वेट जब सपोज 80 kgs है डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, जैसे अगर 150 सेंटीमीटर हाइट है सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 2.25 होगा। सो 80 को 2.25 से डिवाइड करेंगे, वी गेट द BMI। जो हाइट है उससे साथ डिवाइड करेंगे या वेट के साथ डिवाइड करेंगे? वेट अगर आप डिवीजन देख रहे हैं तो हाँ। इट विल बी लाइक दिस। ओके। I'll just show you weight missing the this will be weight divided by height in centimeters multiply by height। तो ये height square आप जब लेंगे then you divide it by weight। ओके, Okay, थैंक यू। most welcome। Yes, Abha, please ask your question। Hello ma'am, good evening. Good evening। Ma'am, how to calculate the body fat? सी बॉडी फैट कैलकुलेशन नहीं हम कर सकते। बॉडी फैट परसेंटेज बॉडी एनालाइजर से कैलकुलेशन हो सकती है। देयर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉडी फैट। यस, देयर आर सर्टेन एप्स जहां आप अपनी बॉडी की कुछ मेजरमेंट्स, एज, वेट, हाइट इंसर्ट करते हो तो वो कैलकुलेट हो जाता है, बट फॉर्मूला कोई नहीं है। Okay. Okay. यस सोनाली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी, इसमें BMI में विसरल फैट भी कैलकुलेट होता है? नो, No. that is So do done we with the help of machines only। Okay, so we can calculate BMI with the help of machines. We have machines also. Yes, certainly we can calculate. If somebody has machines, obviously when you put weight and height, you will get the BMI। So in the same way, can we calculate the BMR as well? Yes, machines do calculate, but we going forward हम अभी BMR कैसे calculate करना है। For example, आप एक online consultation ले रहे हो and the individual is not available to stand on the weighing machine and you just have the data, so how will you calculate BMR in the physical absence of individual? We will be doing that। Yeah, got it. So I just want to know, Miss, how I can calculate the visceral fat if I want to calculate? That can only be done through machine. The person has to stand, or again there are certain apps wherein specific measurements are required to be entered and then you can calculate the visceral fat। Okay. Thank you. You know, manually we can't do that। Yes, Sugandha, please ask your question। Yeah, my question is that in the waist to hip ratio, Yeah. where exactly do we measure at the waist, at which point? Is it at the smallest area? Narrowest part of the waist, Okay. and broadest part of the hips। Okay, thank you. Okay, all right, let's move forward to BMR calculations। Okay, now coming on to BMR। So BMR we calculate based on the equation which is Harris-Benedict equation, जो बहुत accurate calculations बताती है। Now BMR, our purpose is not to calculate BMR. Our purpose is कि हमें पूरे दिन में कितनी एनर्जी चाहिए, which is total daily energy expenditure calculation is our purpose। So yesterday we did total energy expenditure will have BMR, physical activity, metabolism of food। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए हमें दिन भर में एनर्जी चाहिए होती है। So we will be calculating BMR, but BMR calculation के लिए हमें सबसे पहले understand करना है activity factor, because when we are calculating BMR, we need 4 things: age, weight, height, sex of an individual, and the physical activity, कितना वो individual physically active है। So we basically need 5 things to know how much a person needs total daily requirement of a person। So let's understand first कि हम physical activity factor कैसे लेंगे, because this is the most important thing। अगर हम physical activity factor गलत ले लेते हैं हमारी पूरी calculations गलत हो जाती है। So physical activity के लिए हम 1.3 is taken if a person is taken as a sedentary। So
sedentary हम किस individual को बोलेंगे? If a person is just doing normal work, if the person is just doing routine work, अपना घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या just routine work कर रहे हैं, that individual is known as sedentary. Second thing, if a person is going for walk, morning 30 minutes and evening 30 minutes, still we will and the walk is very light, ठीक है, वो leisure walk कर रहे हैं, वो friends के साथ talk and walk कर रहे हैं, या वो leisure walk कर रहे हैं जिसमें उनको sweating नहीं हो रही, उन्हें breathlessness नहीं हो रही, वो थक नहीं रहे हैं, ठीक है, because of high speed walk. So he's doing just light walk, so that individual will always also be categorized as sedentary only. Now any activity जो हमारी heart rate increase करती है for at least 30 minutes, then it is known as a activity. Anything that we are doing and is not increasing our heart rate, we are considering it as sedentary. For example, if a person has climbed stairs and 2 floors climb kiye within 1 to 2 minutes, heart rate increase ho gayi, still we will not call that person light active, we will call that person sedentary only, because 1 to 2 minutes की हार्ट रेट से ज्यादा कैलोरीज में डिफरेंस नहीं आता, फैट लॉस नहीं होता है, ओके. बट एक इंडिविजुअल 30 मिनट्स रनिंग कर रहे हैं या 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, देन वी कैन कंसिडर हिम एज अ लाइट एक्टिविटी पर्सन, ओके. सो फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हैज डन 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, but after doing 20 minutes of exercise, the entire day the person is sitting at one place and doing his work, he's not getting up, then also we will call him as sedentary, because it is very important to be moderately active throughout the day, which means not that कि आपको throughout the day exercise करनी है, which means you should be getting up from the place after every 1 hour and take a round of your office or your home, but you should not be sitting at one place for a very long duration, okay. So that is known as sedentary. Light is anybody whose heart rate is increasing and is active for above around 30 minutes and is active throughout the day. 30 minutes exercise कर ली, पर पूरा दिन he's sitting, so we will take very light, 1.4 ले लेंगे, but very light. Then moderate is activity or exercise of 1 hour plus active throughout. Heavy is exercise of 1.5 hour plus active throughout. And exceptional is exercise of more than 2 hours and active throughout. Any questions in the activity factor understanding? Yes, Gra, please ask your question. मैम जैसे हमने सुबह हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करी या 1 आवर की एक्सरसाइज करी, बट फॉर होल डे अगर हम लोग जैसे ऑफिस वर्क में सिटिंग करते हैं और बीच बीच में अगर हम 5 to 10 मिनट्स हर 1 आवर में अगर हम लोग वॉक करते हैं, तो किस कैटेगरी में आएगा, कौन से स्टेटस में आएगा? अगर आप 30 मिनट्स कर रहे हो तो लाइट एक्टिविटी में आएगा, अगर आप 1 आवर कर रहे हो तो मॉडरेट एक्टिविटी में आएगा, बट दैट 30 मिनट्स एंड 1 आवर शुड बी इंटेंस एक्सरसाइज, दैट शुड नॉट बी लाइट एक्सरसाइज. No, for a whole day. Actually, in morning we have done the exercise for 1 hour. Okay, but the whole day we are sitting in our office. हाँ, so that is okay. आपने जैसे बोला कि whole day you are sitting, but every 1 hour you are getting up and walking here and there in the office. Only for 5 to 10 हाँ, minutes. that is okay. You are active. Okay. You're not sitting at one place for 4 to 6 hours. You are getting up from your table after every 1 hour. So अगर आपकी exercise morning में 1 hour intense है, आपने 1 hour running की है या brisk walking की है या 1 hour gymming की है, wherein आपने cardio strength किया है, whatever intense exercise की है, तो it will fall under moderate. And ma'am, second thing is that what will be the age factor for this? There is no age relation with the activity factor. Okay. Okay, there is no relationship of age with activity factor. Right, ma'am, क्योंकि जनरली अभी जैसे काफी आ रहा है कि भाई एक्सरसाइज जिम में एक्सरसाइज करते समय या फिर
रनिंग करते समय हार्ट अटैक्स के काफी केसेस अभी वो ऑल टुगेदर डिफरेंट रीजंस हैं, उनका इनसे अभी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो हार्ट अटैक्स के ऑल टुगेदर डिफरेंट रीजंस होते हैं, है ना? थैंक यू। Okay. Yes, Sugandha, please ask your question. Yeah, my question is that stretching and yoga for half an hour, what category does it fall in? So yoga again, which type of yoga? Moderate level yoga, you can say a little bit of stretching and a little bit of increasing of the heart rate. No, so there are, different yogas like beginners level, intermediate, No, या कोई एक intermediate, individual सिर्फ intermediate. सूर्य Intermediate नमस्कार कर रहे हैं, हाँ जी, 20 to सूर्य 30. नमस्कार कर रहे हैं, स्ट्रेचेस कर रहे हैं और बाकी भी योगा कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली अ मॉडरेट लेवल. Okay, so now I'll tell you one thing. If a person is doing Surya Namaskar for 30 minutes along with stretches, it will fall under light activity. If a person is doing power yoga, hatha yoga, vinyasa yoga for 1 hour, then it will fall in the moderate category. अच्छा, नहीं वो नहीं, तो लाइट है मेरा. Okay, thank you. Harshita, please ask your question. Ma'am, what swimming falls under? I think it's like moderate. स्विमिंग, yes, स्विमिंग इज द एक्टिविटी जहाँ पे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, और अगर आप कंटिन्यूस लेंथ्स कर रहे हो विदाउट टेकिंग ब्रेक, लाइक बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द कितना लंबा स्विमिंग पूल का स्ट्रेच है, if the person is doing continuous stress lengths and not taking break, like usually I have seen people take length, they take break, वो खड़े हो जाते हैं एक एंड पे जाके, और फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 minutes 3 minutes दे अगेन टेक अ लेंथ एंड दे टेक ब्रेक. सो इस टाइप में तो वो लाइट एक्टिविटी में आएगा, बट अगर कंटिन्यूस लेंथ्स हो रही है एंड दे आर टेकिंग जस्ट 1 to 2 breaks in between 30 minutes activity, then it will go into a moderate activity. Okay, ma'am. Thank you. Yes, Nilima, please ask your question. हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैडम, मेरा भी सेम क्वेश्चन है. मैं सुबह मॉर्निंग में 1.5 आवर्स योगा करती हूँ और शाम को मैं 1 आवर वॉक भी करती हूँ और घर में पूरा हाउस होल्ड वर्क भी करती हूँ. तो किस इसमें एक्टिविटीज में आएगा मेरा? मॉडरेट. ओके, तो मतलब ये इतना हमको बॉडी के लिए अच्छा है क्या? मतलब हमारा ओवर तो कुछ नहीं हो रहा है ना योगा वगैरह? No, I don't think so. It is over. Okay. Thank you, ma'am. Most welcome. Yes, Rajesh, please ask your question. Yes, madam. Good evening. Good evening. I want to ask you whether cycling, daily 30-minute cycling is helpful for the cholesterol things? Yes, it is. It is. Yes. Okay. स्टेशनरी साइकिल से ज्यादा अगर आप नॉर्मल साइकिलिंग करेंगे बेटर होगा. ओके, विशाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम, जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिम के अंदर, सेट्स के बीच में जैसा 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड कार्डियो नहीं करते, 45 से 1 घंटे के बीच में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं एंड बाकी जो पूरा दिन वो हम एक्टिव रहते हैं जैसे जॉब या स्टडी, तो मैम वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? क्योंकि कार्डियो एंड स्ट्रेंथ. दैट इज ओके. जी मैम, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो मतलब बीट्स पर मिनट होता है हार्ट का, तो मैम वो डिफरेंट होता है ना, तो मैम ये इसलिए पूछना था ये कौन सी उसके अंदर फॉल करेगा अगर 1 आवर की ड्यूरेशन है तो. 1 आवर से कम, मैम 45 मिनट से 1 आवर. हाँ, ओके. मॉडरेट आप कंसीडर कर सकते हो. ओके. यस, सुनीता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Sunita, please unmute yourself and ask your question. Yes, ma'am. Good evening. Ma'am, I get up at 4 in the morning. I start my walking at 5 to 6 for 1 hour. Then I go for Zumba. As I'm a yoga instructor. And then after that, I take 1 hour yoga, in advanced yoga and other pranayama. It is my in which factors?
So it will fall under heavy activity. So I should not do. My No, weight no. is my I am weight is saying if you are asking about kahan pe ye fall hota hai, it falls under yeah, heavy activity. activity. Okay. Thank you, ma'am. All right, Shweta, let's take your question and then move forward. Yes, please ask. गुड इवनिंग मैम। Good मैम मेरा evening. क्वेश्चन है कि मैं मॉर्निंग में 20 मिनट्स प्राणायाम करती हूँ, उसके बाद में पावर योगा विद वेट्स 1.5 घंटा एंड आफ्टरनून में 5 to 6 इज पावर योगा अगेन। तो ये जो प्रैक्टिस है ये किस में आता है? Heavy. हेलो, It will fall under heavy category. ओके। एंड मैम अभी मेरा वेट जो है वो एक ही जगह पे स्टेबल हो गया है, तो वो कम भी नहीं हो रहा अगर मैं कितना भी प्रैक्टिस कर लूं। तो इस मीन्स कि मुझे अपना डाइट में चेंज करना चाहिए। Most probably, yes. ओके। Okay. All right, let's move forward. So जब हम activity factor understand कर लिया, now we use different equations for males and females. Okay, BMR जब हमें calculate करना है या total daily energy expenditure जब हमें calculate करना है, males के लिए different equation है, females के लिए different equation है. The standard equation that we will be using for all the males is this equation that is written here. Okay, इसमें ये standard रहता है numbers 66.4, 13.7, 5, 6.8 remains same. We just need to add weight, height and age in the figures. एंड हमें 13.7 को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.8 को एज से मल्टीप्लाई करेंगे. वी सॉल्व द ब्रैकेट्स, वी डू द एडिशन एज पर दिस. We need to do the add these first 3 numbers and subtract the last number. Then we get this value. This is known as BMR. Okay, ये BMR है. Now our task does not get over here. BMR जब आ जाएगा, we need to multiply this BMR with the activity factor. Because according to जैसे वो sedentary है, light है, moderate है, जो भी वो है, उनका activity factor 1.3, 1.5, 1.6 जो भी लेके, we will be multiplying this BMR with the activity factor and then we get this value. This value is total daily energy expenditure, which means we need to make the daily diet of around 2300 calories for this person. Okay. Then we move on to the females. Females में भी ऐसे ही होता है. We take this equation for all the females starting from the age of 18 and same way से हम brackets को solve करते हैं, addition subtraction करते हैं and then we get BMR. BMR को हम activity factor से multiply करेंगे. BMR को हम activity factor से multiply करेंगे. We will get the total daily energy expenditure of that person. Males and females के लिए separate equations है. So basically we here understand कि total daily energy expenditure कैसे करना है. Okay, according to the activity factor. Now BMR when we are talking about and TDEE when we are talking about, BMR calculates कि resting state में हमें कितनी calories चाहिए. TDEE tells us कि resting state में 24 hours में with the activity हमें कितनी calories चाहिए. BMR just tells us कि हमें basic activities के लिए कितनी calories चाहिए, whereas TDEE tells us कि हमें basic activities के साथ plus जो हम physical activity कर रहे हैं उसके लिए कितनी calories चाहिए. BMR हम Harris Benedict equation के साथ calculate करते हैं. TDEE हम BMR को जब activity factor से multiply करते हैं तो आता है. BMR का weight gain, weight loss पे कोई effect नहीं है, whereas जब हम TDEE calculate करते हैं और TDEE का हमारा final answer आता है, it does have an impact of weight loss and weight gain. For example, एक individual का 2000 kilocalories आया and now this person wants to
lose weight. ओके सो अगर इस पर्सन को वेट लूज करना है तो हम 2000 में से 500 और 600 और 750 कैलोरीज माइनस करते हैं एंड देन वी प्लान द डाइट. ओके बिकॉज हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान करनी होती है. So TDEE में से we subtract the calories and make the diet plan. If the individual wants to gain weight, हम ये 2000 कैलोरीज में 200 या 300 कैलोरीज ऐड करेंगे and then we make a diet plan of 2200 or 2300 kilocalories because that individual wants to gain weight. So TDEE में addition subtraction होती है, BMR में नहीं होती. Okay. So total daily energy expenditure that we calculate will have BMR, physical activity, thermic effect of food, and NEAT. NEAT is non-exercise activity thermogenesis. Non-exercise activity thermogenesis मतलब जो हम चीजें कंसिडर नहीं कर रहे, जैसे household chores, walking up and down, everyone. Walking up and down. So we do not consider कि हमने ये भी activity की है, but that does consumes a lot of calories. Okay. Resting metabolic rate, resting energy expenditure, basal metabolic rate are all same terminologies. Okay. Now there are some instances wherein हम total daily energy expenditure नहीं calculate करते. Maybe in conditions where the person has multiple disorders, where maybe in the conditions where the person is already consuming a very low or a very high calorie diet, उन cases में हम क्या करते हैं, हम BMI ले लेते हैं. BMI से we understand whether the person is overweight, underweight or normal category. And we understand उनकी activity level क्या है. Then we multiply, take the value per kg body weight. For example, if a person is falling in the normal category, ठीक है, उनका BMI normal category में है, and he is very active, so that person is 60 kgs in weight. So 60 kgs multiplied by 40, we will make a diet plan of 2400 kilocalories for that person. Okay. For example, a person is overweight, ठीक है, and the person is sedentary, and the person is 90 kgs. So in that case, the person is overweight and is sedentary. So we will be taking 20 kilocalories per kg body weight. So we will be making 1800 kilocalorie diet. इसमें फिर हम addition subtraction कुछ नहीं करते. Okay, this is the second way, but a less authenticated way because इसमें age consider नहीं की जा रही है. Okay, so इतना reliable नहीं है जितना Harris Benedict होता है. Coming on to the next topic, I'll just take the topic first and then I'll take your questions. Recommended dietary allowance. Recommended dietary allowance means कि एक average male या एक average female को कितनी quantity में एक particular macro या micronutrient चाहिए. फर्स्ट RDA पब्लिश हुआ था 1943 में, ये कॉन्स्टेंटली रिवाइज होता रहता है. रिसेंट RDA 2020 में पब्लिश हुआ है ICMR के थ्रू. एंड RDA डज नॉट अप्लाई टू द सिक पीपल. RDA इज एप्लीकेबल टू ओनली फिजिकली फिट पीपल. प्रेगनेंसी लैक्टेशन के भी RDAs इस्टेब्लिश किए गए हैं. बेसिक RDA, बेसिस ऑफ RDA, रेफरेंस मेन एंड रेफरेंस वुमेन का अगर हम देखें, अगर आप इधर देखोगे, the reference men and reference women are considered as the people who have normal BMI, who have a very good lifestyle. But हम RDA, these are the benchmarks. High weight is 65 kgs in man and 55 kgs in female. So अगर तो इसके hover around है तो ठीक है, एक good lifestyle है तो ठीक है. But अगर हमें specific customized diet plan करनी है for a person who has high weight or who has some conditions, so what we do is, and we 99% we
calculate macros ourselves. हम RDA में से macros नहीं लेते. RDA में दिए हुए हैं protein and carbohydrates, but that is for according to the reference men. ठीक है, बट एक इंडिविजुअल का वेट 65 kg नहीं 90 kg है, तो हम कैसे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स उनको दे सकते हैं, है ना? सो हम ऑलवेज मैक्रोस खुद कैलकुलेट करते हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट्स हम RDA चार्ट में से लेते हैं. माइक्रोस हम कैलकुलेट नहीं करते बिकॉज एज सच वी रिक्वायर देम इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, सो वेट से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ओके, सो RDA बेसिकली हम फूड पैकेजेस में यूज करते हैं फॉर चेकिंग, फॉर एस्टैब्लिशिंग the recipe and the nutritional content. वो disease management में hospitals में use होता है, schools में use होता है, mid day meal programs के लिए. Third thing that we are going to do is, so when you have a client or when you're planning the diet for anybody, first thing is you are going to calculate the BMI. Second thing is you are going to calculate the ideal body weight. Third thing is you are going to calculate the total daily energy expenditure, and you are going to calculate the macros and you are understanding कि कौन से specific micros आपकी diet में होने चाहिए. Macros कैसे calculate करना है, I will be teaching you. Regarding micros, we will be taking from the RDA. Now the third thing that comes is assessing their nutritional status. As in न्यूट्रिशनल स्टेटस में ABCD पैरामीटर्स होते हैं. फर्स्ट इज एंथ्रोपोमेट्री, जहां हम वेट, हाइट, BMI, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशो, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सब लेते हैं एंड वी कंपेयर इट वीकली. देन द सेकंड इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एज इन उनके कुछ ब्लड केमिकल, ब्लड टेस्ट अगर हुए हैं या रिसेंटली हुए हैं, ये लास्ट 3 months में हुए हैं, we need to check them. Once in 6 months everybody should get their blood tests done. So अगर हमारे पास ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होगी तो हम एक डाइट को और ज्यादा हेल्दी बना पाएंगे उनकी नीड के हिसाब से. हीमोग्लोबिन लेवल्स अगर कम है, we know we need to increase the iron intake. WBCs are the immune cells of our body. If a person is having frequent cold, cough or flu or frequently वो बीमार हो रहे हैं, so we need to check their WBC values. ESR means inflammations. Body में बहुत infections या inflammations हैं. So if it is high, that means there is inflammations or infections in the body. Blood sugar fasting, random glucose tolerance, and HbA1c, which is glycosylated hemoglobin, tells us about their diabetic profile. Lipoprotein profile tells us about their heart health. लिवर फंक्शन ऑब्वियसली लिवर के बारे में बताता है. रीनल फंक्शन के सारे टेस्ट हमें किडनी के बारे में बताते हैं. यूरिन एनालिसिस टेल्स अस कि कुछ एक्सेस तो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो रहा, विच इज नॉट गुड फॉर किडनी. हार्मोन टेस्ट में बेसिकली ये थायराइड टेस्ट है, विच टेल्स अस अबाउट द थायराइड हेल्थ ऑफ अ पर्सन. Additionally, we should always tell them to get B12 and D levels checked because मेजॉरिटी पीपल में ये लेवल्स कम होती है और इनकी कम होने की वजह से काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर इन द रेंज ऑफ दीज विटामिन D and B12 levels, otherwise supplementation is required. Then we need to understand about their clinical background, कि पास्ट में क्या उनको कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी हुआ था, कोई उनका ऑपरेशन हुआ है, पास्ट में कोई उनको मेडिकल इलनेस थी जो उन्होंने रिकवर की है, क्या उन्हें कोई गट इश्यूज है, मे बी दे हैव एनी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग इश्यूज, एनी गट इश्यूज. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड उसके अकॉर्डिंग्स में ही हम उनकी डाइट प्लानिंग करते हैं. एंड द फोर्थ एस्पेक्ट इज डाइटरी असेसमेंट. डाइटरी असेसमेंट मीन्स हम उनका 24 आवर्स में वो कितना क्या डाइट में लेते हैं. लाइक वंस दे गेट अप इन द मॉर्निंग and till the time they go to bed, तो पूरे दिन में उनका डाइट पैटर्न कैसा रहता है. What is the breakfast, lunch, dinner? Do they take anything before breakfast? What is the first thing that they take? Anything between breakfast and lunch? Anything between lunch and dinner? How many cups of tea? How many are they sugar? Have they sugar fonding है उनको? Do they take anything after dinner? So इन सब चीजों
के बारे में we need to know from that in detail, from the person in detail. So dietary assessment में हम 24 hour dietary recall करते हैं, जिसमें हम पूरे दिन की डाइटरी रूटीन के बारे में पूछते हैं, क्या उन्हें कोई फूड एलर्जीज हैं, क्या उन्हें पर्टिकुलर फूड की लाइक्स डिसलाइक्स हैं, एक पर्टिकुलर फूड वो कितनी फ्रीक्वेंसी में 1 वीक में लेते हैं, वो नॉन वेज एवरी डे लेते हैं या ऑल्टरनेट लेते हैं या वंस इन अ वीक लेते हैं, वेजिटेरियन में फ्रूट्स कब लेते हैं, एग्स कब लेते हैं, नट्स एंड सीड्स कब लेते हैं. सो वी नीड टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फूड्स दैट दे टेक एंड देन वी टेल देम टू मेंटेन देयर फूड डायरी. फूड डायरी बेसिकली हेल्प करता है टू इवेल्युएट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी फूड इज गिविंग एनी गट इश्यूज. फूड डायरी इज बेसिकली हेल्पफुल इन ट्रैकिंग वेदर यू आर ऑन ट्रैक. अगर आपने कोई डाइट दी है उससे डाइवर्जेंस तो नहीं हो रही, एंड देन वी need to make sure and understand उनका food consumption कैसा है, कितनी quantities में वो food consume कर रहे हैं. Okay, so next thing, I'll just I have 15 minutes. Let me take the topic very rapidly and then I'll take your questions. Now food जो है, because we will be planning the diets, हमें अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी डाइट में प्रोटीन हमें चाहिए या फैट्स हमें चाहिए या पर्टिकुलर विटामिन चाहिए, सो बेसिकली फूड्स का हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए फूड कंपोनेंट्स का. सो बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड एनर्जी गिविंग फूड्स हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम इंक्लूड करते हैं बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग गुड प्रोटीन्स फ्रॉम देम. They are wonderful sources of proteins. They are good sources of fats, but depend कि हम कौन सा दूध ले रहे हैं. Whether we are taking full cream milk, double toned milk or toned milk. Okay, वो उस पे depend करता है. Milk gives us carbohydrate also, moderate amount. Milk is a very good source of calcium, vitamin D. मिल्क में जो स्वीट टेस्ट आता है, नेचुरल स्वीट टेस्ट, वो लैक्टोज की वजह से होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड अगर हम कोई एक इंडिविजुअल लैक्टोज इनटॉलरेंट है, दैट इंडिविजुअल नीड्स टू अवॉइड मिल्क बिकॉज वो फिर गट को प्रोलिफरेट करेगा एंड फिर वो प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं. Milk is a good source of B vitamins. Milk is a poor source of vitamin C. Milk is a great source of protein, moderate source of carbohydrate. It has good amounts of sodium, potassium, calcium, magnesium. Milk के fermented and non-fermented products भी बनते हैं and vegan milks भी हम ले सकते हैं. But obviously vegan milk की constitution is not as good as cow's milk. Okay. Then we have another component, food component, which is meat, fish, poultry. Now when we are talking about meat, fish, poultry basically are good sources of proteins. हम basically इन्हें proteins के लिए add करते हैं. They are good sources of good fats also. Red meats में थोड़े से saturated fats होते हैं, वो हमें avoid करना चाहिए. Chicken, fish, poultry have good fats. They are made up of all the essential amino acids, तो इन्हें हम complete proteins भी बोल सकते हैं. Fat content 5 to 40% vary करता है. कुछ are good sources of fat, कुछ food are not great sources of fat, they have moderate fats, but non-vegetarian food में cholesterol content is more. We have to very प्रिसाइज इन अंडरस्टैंडिंग कि एक इंडिविजुअल को अगर लिपिड इश्यूज हैं तो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के हिसाब से ही हमें नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्लूड करना है. मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, फॉस्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स एंड विटामिन ए. When we are talking about egg के two parts होते हैं, egg yolk and egg white. Egg white is a good source of protein. Egg yolk is a good source of good fat. We should always take whole egg. Until and unless the person has cholesterol issues, high triglyceride, high blood pressure, lipid profile में problems है, then the person should avoid egg yolk. Otherwise, whole egg is recommended. It is very, very healthy. It has good fats in them.
The egg yolk obviously will have triglycerides in them, hence it needs to be avoided. Eggshells are a great source of calcium. They have good amount of proteins in them, and basically egg yolk mein all the fat soluble vitamins are there, vitamin A, D, E, K, and their whole egg mein there is a good source of vitamin A, riboflavin, folic acid, B12. and अगर egg को fish oil capsule hen को feed किया जाता है, it is rich in the cholesterol content of the egg can be reduced. When we are talking about fish, fish is the wonderful source of omega-3 fats, which are very, very healthy. They have good amount of proteins in them. They have good fats in them, which is a great percentage fats. They are rich in calcium and they are rich in copper, iron, B12, D, niacin. They are great sources of vitamins. Pulses are basically good sources of proteins. They do have carbohydrates. One exchange of proteins, pulses gives around 15 grams of carbohydrates and 6 grams of protein. So very good sources of energy, carbohydrates and proteins. Minimum amount of fats होते हैं उनमें. जो पल्सेस हैं वो फाइटिन से बाइंड होते हैं. So जब हम pulses को soak करते हैं before cooking, these phytins get released and nutrients are available to us in good amounts. The pulses are good sources of vitamin B. So when we soak a pulse in cold water or warm water, phytic acid उसमें से reduce हो जाता है. Nutrient absorption and nutrient availability is very much in our body. Germination, अगर हम sprouting करते हैं तो minerals like calcium, zinc, iron are released and they are available to us in great amounts. Pulses after germination are a good source of vitamin B, vitamin C, folic acid, choline, biotin. Fermentation जैसे phytic acid को remove करती है, so the availability of nutrients increases 3 to 4 folds. Vegetables and fruits, vegetables 3 categories के होते हैं. Green leafy vegetables, which are a good source of beta carotene, calcium, iron, B vitamin, folic acid, ascorbic acid. Roots and tubers are high caloric vegetables. They are poor sources of calcium, iron, B vitamins and proteins, and other vegetables are also good source of vitamin C and fiber content. Fruits basically हमें antioxidants देते हैं, vitamins देते हैं, minerals देते हैं. They are very healthy in terms of micronutrients. Fruits different classification के होते हैं, soft, hard, stone, citrus, tropical fruits, and we should be including all the foods according to the season in our diet because they are a wonderful source of antioxidants. Chlorophyll, carotenoids, anthocyanin, anthocyanins, ये सब 4 names are the names of different antioxidants जो कि colors के basis पे divide किए जाते हैं. Carotenoids basically अगर आप देखो mango, papaya, melon, red, yellow, orange color foods में होता है. Chlorophyll is green color foods. Anthocyanin is basically white color foods or greenish whitish color foods. Anthocyanins is basically purple black foods. Okay, so that should be included. And cereal groups. Cereal हमारी डाइट स्पेसिफिकली इंडियन डाइट में बल्क में प्रेजेंट होते हैं. तो सीरियल्स हमें हमारी डाइट के लिए दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. They gives us protein. Every exchange of cereal gives us 2 grams or 3 grams of protein. Cereals basically are very good source of B vitamins. कुछ जैसे wheat is a good source of gluten. Rice, barley, millets are gluten free cereals. Oils and fats हमें double the calories देते हैं. And oils and fats 2 sources में से available है, animal fats and plant. So based fats, plant based fats हमारी डाइट में ज्यादा होने चाहिए. Saturated fats हमारी डाइट में कम होने चाहिए. Fats have good amount of water soluble vitamins which are vitamin A, D, E, K, and they help in nourishing the taste and texture of the food. Sugars, basically sugar and sugar derivatives are a great source of carbohydrate. उनमें 80 to 85% कार्बोहाइड्रेट होता है. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि शुगर को रिप्लेस करके ब्राउन शुगर, जैगरी लेते हैं.
स्पेसिफिकली अगर उनको अपना कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है, so we have to avoid the entire sugar category. If we are replacing sugar with brown sugar, the carbohydrate content is still there. It is just a psychological thing that we are doing. It is not like that. So all the sugars like D-glucose, fructose, corn syrup, molasses, maple syrup, honey, jaggery, caramel sugar, agar aap dekhen, they are high source of carbohydrate. Yes, the quality of carbohydrate is better in jaggery, molasses, maple syrup as compared to the white sugar. This is the exchange list which you will be referring to when you are planning the diets coming in the future. So just keep these, go through these exchange lists. I'll just take the chat questions first of all. If a person is skinny fat, what should be done first? Fat loss or gaining? Agar like 5'8" is the height, 64 weight, 24 body fat. So 5'4" is 160, 5'8" is 170. He or she is in ideal body condition, so normal maintenance should be done. PAL value is the activity value. If person only doing 3-day weekly gym workout, so उनका हम average लेंगे और average के हिसाब से उनका activity factor consider करेंगे. Phytic acid is basically एक component होता है दाल्स में जो nutrients को bind करके रखता है. वो अगर हम दाल को बिना सोख किए कुक करते हैं तो then those nutrients are not available to us. But if we soak the dal for 3 to 4 hours, so soaking process ये phytic acid को remove कर देती है and then the nutrients are available to us in a great way. Green also has antioxidants. Should we discard the water remained after soaking the pulse? No, we should cook in the same water. Yes, Beena, please ask your question. Ma'am, first thing in the morning, can we have amla, vegetables, fruits and nuts together in the plate? Yes, we can have after having water. After having that. Oh. And also if a person is vitamin D and B12 deficient, how long they will have to take the medication? At least depending upon कि उनकी levels कितनी कम है, minimum 1 month to 3 months depending upon the deficient levels. And the gap between each tablet? Every day 1 tablet needs to be taken. So for and 1 vitamin D, vitamin D के usually doctors sachets prescribe करते हैं, which needs to be taken once in a week. Okay. So for 1 year or 1 month? No. I said just now, it depends upon the deficient levels. कितनी deficiency है? It ranges from 1 to 3 months, depending upon कि levels कितनी deficient है या moderately deficient है, highly deficient है. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Yes, Hema, please ask your question. Ma'am, sugar can be replaced with stevia? Yes, stevia is a healthy alternative to sugar. Stevia ki jo, because it is derived from the natural green leaves, stevia plant ki leaves, yes, it can be replaced. और मैम जो जैसे शुगर फ्री लोग लेते हैं तो क्या वो हेल्दी होता है या फिर अनहेल्दी? It is very unhealthy, not that कि immediate effects दिखते हैं, उसको consumption के long term impacts होते हैं kidney और liver में, so it is not the right thing to have. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Yes, Anita, please ask your question. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. If there is good diet, but there is some absorption issue, and because of that B12 levels are always low, in such cases, what to do? So we have to first make sure that the absorption issues are corrected, and then we work on increasing the B12 levels in the body. So step by step, once you know कि root cause क्या है absorption issues का, fix that with the help of diet and lifestyle, and then fix the B12 deficiency. Any questions, Anita? Please raise your hand again. Yes, Beena, please ask your question. Beena, please ask your question.
I'm already done with that question. Okay, thank you. All right. Yes, Priyanka, please ask your question. हेलो मैम। Yes, Priyanka. मैम अगर स्टीविया जैसे हम लेते हैं तो हमें कितने टाइम तक मतलब शुगर को रिप्लेस करते थे उसको हमेशा यूज कर सकते हैं? जी हाँ, स्टीविया इज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव, आप उसे यूज कर सकते हैं, बट अगेन स्टीविया की भी ना एक वो होती है कि you can't use it more than a certain grams. So depending, just let you know, stevia. Just give me a moment. Yes, ma'am. Stevia, the requirement can be 4 milligram per kg body weight. Okay, so just note everybody, if anybody is prescribing stevia to anybody, so 4 milligram per kg body weight से ज़्यादा prescribe नहीं करना है. 4 milligram means, for example, an individual is 4 milligram per kg body weight. So एक individual 60 kg का है, multiply by 4, which is 240 milligrams, not even 1 gram. Okay, so 1 gram is 1000 milligrams. So अगर 60 kg का है, so 240 milligram, which means less than 1/4 spoon should be given to them. Safer dosage is important. मैम तो इसे हम लॉन्ग पीरियड में यूज कर सकते हैं ना मैम वेट लॉस पे? हाँ, कर सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू मैम. Yes, Swagita, please ask your question. मैम क्या शुगर पेशेंट मिल्क ले सकते हैं मैम? हाँ, ले सकते हैं. और शुगर पेशेंट के लिए मतलब वेट गेन के लिए जैसे उनके शुगर डायबिटिक पेशेंट को वेट गेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनका वेट गेन कैसे हो सकता है? मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट कुछ ले सकते हैं? डेफिनेटली हाई कैलोरी डाइट बना सकते हैं, हाई डेंस फूड्स दे सकते हैं. देयर आर वेट गेन सप्लीमेंट्स आल्सो दैट कैन बी गिवन टू देम. तो शुगर पेशेंट व्हे प्रोटीन ले सकते हैं मैम? हाँ जी, ले सकते हैं. ओके मैम, ओके, थैंक यू. यस पृथ्वी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Ma'am, I wanted to know that cycling is recommended for arthritic patients. It really depends upon unka severity of arthritis they have. If they are comfortable, recommended hai, but if they are comfortable, yes, they can most welcomely do that, because arthritis is basically inflammation inside the body. Yeah. और अगर वो comfortable नहीं है, obviously they should not force the body or exert the joints to do the activity. Then they can opt for any other activity. Okay, thank you, ma'am. Okay, Annika, please ask your question. हेलो मैम. मैम जो ये हमारा स्प्राउट्स होते हैं, क्या इनको हम बॉईल करके भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं. तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम रहती है या मैम कुछ कम हो नहीं जाती है? चेंज होती, just do it for 2 to 3 minutes. It is not going to change a lot. 2 to 3 minutes means boiling or 1 whistle of pressure cooking. ओके ओके स्प्राउट्स ओके. कर रहे हो ना, बिकॉज आप उसको जर्मिनेट कर चुके हो. जर्मिनेशन के बाद आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे ही मिलेंगे. ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. यस पारुल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Ma'am, how to identify a person is a gluten allergic or milk allergic, lactose उनको कुछ intolerant? गट इश्यूज होंगे, ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसे गट इश्यूज होंगे, क्रोनिक, and then obviously there are certain tests which confirms that whether they are gluten sensitive or lactose intolerant. Okay, is there any test for that? Yes, there are tests for that. Immunological tests होते हैं, उनके किए जाते हैं, which the doctor prescribes them. Okay. Yes, Harsh, please ask your question. Hello, ma'am. Hello.
How to deal with a patient for weight reduction having PCOD, hyperthyroidism, and marginal diabetes? Okay, we have not covered any of the topic till now, so kindly wait. Okay, thank you. Most welcome. Yes, Nigda, please ask your question. यस मैम मैम हमें जो थेरापेटिक डाइट जो देना है किसी को, जैसे उसका क्या अलग अलग ऐसे है वो हमें मिल सकता है? जैसे अगर थायराइड का है, जैसे कुछ स्पेशल डाइट हमें है थेरापेटिक डाइट का अलग कुछ मिल सकता है क्या मैम आपसे? Nigda, you know that we are going to cover these topics. आपको पता है ये कोर्स में हम कवर करेंगे? हाँ जी मैम। है ना? तो हम वेट करेंगे वो टॉपिक कवर होने की, उसके बाद आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अच्छा, अनदर क्वेश्चन मैम, जैसे अभी हम सॉफ्टवेयर में डाल के वो हाइट वेट डाल के फिर जो निकाल देते हैं कि कितना कैलोरीज चाहिए और कितना कैलोरीज चाहिए, ये सही है या मैम हमें मतलब मैनुअल जाना है? हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। सो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, देयर आर मेनी वेज थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट दिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन पर्सन, बट Harris-Benedict equation is the most accurate one specifically for Indian population. So we recommend कि हम Harris-Benedict ही use करें. Online Harris-Benedict मिलती है तो आप वो use कर सकते हैं. Otherwise manually it should be done. Yes, Sonali, please ask your question. Is sugar cane is good to have once in a week, or it also contain carbohydrates? It does contain carbohydrates. So we should limit it, or we can have it? We can limit it. Okay. And to correct our BMI, what we can do is to reduce the fat percentage in our body. What exactly we can do? So we will be covering the weight loss topic, obesity topic. We will be covering that. Okay. Okay. All right. We end up our class for here today. We are done with the timing also, and I will see you all tomorrow. Okay. Please revise these calculations and formulas. If you have any doubt, we can solve the examples in the interactive also. Take care, everybody. Have a nice evening. Thank you so much.